They love creating difference. But if you think about it, you can't have a crisis if you don't have people who would actually create that difference. But in every team, you also need to have onions. What is the role of onions in a crisis? Make a gravy. Or what is the something which is characteristic of an onion? Taste. Usko, whenever you peel an onion, something again it's the same freshness. Every peel is the same freshness. ये वो लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपकी टीम्स के अंदर, आपकी कम्युनिटीज के अंदर, आपके इदारों के अंदर, people who come up with a fresh idea every week. Now week is just rhetorically speaking. They come up with an idea every week, but they won't do anything. जिसको उर्दू में कुछ कहते हैं मुंह का फायर. करना शुरू कुछ नहीं है. But when you speak to them about ideas, every week they sit with you. I have an idea. And then girls. Next time you follow up with them, what happened about the idea? Yeah, I was thinking about it. I have another idea. ऐसे लोगों को जानते हैं आप? And that irritates a lot of people. Let's say if you have a team member who is an onion, there comes a point when you say, "Mehrbani kar, tu kaam kar. Forget ideas. You might as well implement one idea. At least do something." ये idea every time. और idea sorry, प्याज के एक और से भी ना आपका रुलाता है. ये भी रुलाता है लोगों को. आंखों से आंसू निकलवा देता है. You because of onion you have this tears because if they don't implement anything, they are a pain to everybody else. But the ideas they come up with, world class. Excellent. And next level. You were talking about what's happening in Karachi. They'll tell you what is happening in Mexico and how she should be changing. You're speaking of making Karachi green. They will speak of Lord God knows which part of Sahara Desert being made green right now, as we speak. Unimplementable to you, but she just has to share ideas. क्या आपका तो काम है idea देना ना. Idea देके निकल गया. You also have tomatoes. You said tomato. ग्रेवी बनाता है जायका भी और इसको आपस में सारी चीजों को एक मर्ज करके रखता है, मिला के रखता है ना. बिल्कुल सही. बिल्कुल ये बहुत कम हो गया, कभी भी किसी ने नहीं बताया. बोलेगा नहीं ये. Tomato. If I'm looking at a family, you have 3 people in a family, and I'm just saying that you have onions. Looks hard, is hard. Potatoes looks hard, is hard. Tomato looks hard, is Soft. It's hard. You press little bit out. These are people in your around you who are so soft that even you fear giving feedback to them at times. So if I say anything to him, for another 1 week I'll have to take care of him. Our friendship is finished. You don't think I contribute anymore. मासूमियत वाली जो कहते हैं ना, being very cynical about themselves. They're self-critical. Self-critical. You give them feedback. और मैं मजाक में कहता हूँ उसको feedback देने के down to earth. But the क्या है? Down to earth is negative. I wouldn't say negative. They're just too passive. They don't want to hurt people. They don't want to hurt people, and they don't want to be hurt. They're doing good. For example, मैं मजाक में कहता हूँ कि for example, let's just say if Mustafa is my boss, he will say, Farhad, do this. I say, boss, you don't like me anymore. Then for 2 weeks he'll have to keep changing my nappy. No, I didn't mean that. And sometimes people avoid such people. Am I right? Yeah. Because sorry. Touch me not. Yeah, touch me not. Because our styles are very different. So what would people do? But if you have to give feedback, Mustafa will tell, let's say you, कि यार एक काम कर देना. फरहाद को ये कह देना कि उसकी रिपोर्टें जो है ना सही नहीं आती है, वो टाइम पे नहीं आता, उसको कह देना. Now that also depends who he is. If he is a nice, kind person, he will say, you know what, you need to come on time. So it will be easier for me because my peer is telling me. But then what if he's this? फिर नई कहानी शुरू हो गई. ये कहेगा फरहाद से कहना टाइम पे आया कर, ये आएगा यार मुस्तफा से बनती नहीं है तुम्हारी आजकल. That's another bomb that we thrown on my head. My boss doesn't like me. My boss goes around speaking to others about me. So he's complaining about and whining about me to the others. अब आप देखिए किस तरह खिचड़ी बनती है, पूरा माहौल खराब हो जाता है. अब आदमी काम करे या आदमी खिचड़ी मैनेज करे. फिर आपको हर टीम में ये भी चाहिए जिसको लोग नहीं पसंद करते. Every team needs this also in the कढ़ाई. चमचा मिक्सचर है ना. आपके इदारों में, टीमों में, लीकेज के लिए चमचे हैं. अल्लाह का शुक्र अदा करें. They are very, very useful because they don't allow anybody to burn. They will sit here for a little while. क्या हाल चाल है, क्या वो कहते हैं वो समझता नहीं, छोड़ देना, मैं तो उससे बात नहीं करता.
आपने सुना है उधर आपको कोई बात नहीं रही थी, ये हर जगह जाके मैं सबको ठंडा करता है बेचारा। ठीक है, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर इधर। अब लोग ये भी करें कितने चमचे, कढ़ाई की साइज में डिपेंड करता है जी। चमचा हांडी नहीं खाली कर, हानि खाया उसका जो मेन पर्पज उसको लेके जाता है ना। अब जिसको नहीं करना है अलग बात है। वो बदनाम क्यों है जी, वो बदनाम क्यों है? यार यही बच्चों के लोगों को कढ़ाई नहीं समझ में आती ना, लोगों को डाइवर्सिटी नहीं समझ आती। ऐसे लोग होंगे, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलेमैन की किताब का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अच्छे लीडर्स इदारों की पॉलिटिक्स समझते हैं। पॉलिटिक्स खत्म नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स समझते हैं। हर जगह पॉलिटिक्स होती है, हर गुफ्तगू के अंदर पॉलिटिक्स होती है, हर जगह काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से समबडी वाज ऑन अ व्हीलचेयर ओवर हियर, आई मे नॉट हैव डन द एक्सरसाइज कि खड़े होकर ये चीज करें, आई वुड हैव नॉट इंसिस्टेड। दैट्स पॉलिटिक्स। So I've adjusted myself to the situation and doing what is best. पॉलिटिक्स का हमने टाइटल एक सेमेंटिक्स नेगेटिव आ गए, लेकिन होते हर तरह के लोग हैं। आपका चमचा बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि चमचे को चलाने के लिए चाहिए ना, यू नीड समबडी टू मैनेज द चमचा। हाथ से तो नहीं कर सकते, हाथ से नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपने खाली देखना ना फील कैसा, लेट्स सी यू वांट टू कम विद अ न्यू पॉलिसी, यू जस्ट हिट द चमचा, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस। आधे घंटे में सबको पता होगा, ठीक है ना, कि ये होने वाला है। यू गॉट द वाइब्स, राइट? हम यही कर रहे हैं, मैंने कहा था नहीं कि हम कर रहे हैं, हम सोच रहे थे, बट यू बीन एबल टू लर्न। चमचा एक ही होना चाहिए। वो आप बिल्कुल डिपेंड कढ़ाई की साइज पे डिपेंड। जितनी बड़ी कढ़ाई और कहीं के वो भी होता है बड़ा वाला भी डालते, क्या बोलते हैं? हाँ, वो बड़ा लंबा वो सही है। हाँ, सही है, बड़ा फ्यूचर में है वैसे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है, एवरी person that you have in a team, now that's your diversity. Now how can you have a kadai being made if the chamchas, that people say I don't want the chamchas, oil you stay separate, chicken you stay separate, you don't have a kadai usually. You can make other things as well. So when you say diversity, you can make other things, you can make a chicken tikka if you want, you can't make a kadai. And अगर objective है अच्छा बड़ा डिश बनाना, कढ़ाई अगर बनानी है, we need to be able to bring all of these ingredients together to achieve the larger purpose. अब उसके अंदर भी कोई ना मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, या ये ऐसे मुझसे नहीं होता। Imagine a career where people just don't want to mix it. They're standing and sitting in their own different corner. स्टू बन जाएगा, स्टू बन जाएगा बिल्कुल। ये दोनों में यकीन होता जा रहा नहीं है, घर में पकाता है। तो ये सारे हमारी बारी बहुत सुखी है। तो ये सारे जो है ये सब साथ में जब मिलते हैं अलग अलग जगह के, that is when you have your kadai which comes into place. Now if you say you don't want to have it, don't have it, but then don't complain. Diversity for success, because everybody's success is very different. If you have this, you don't have to answer that. If you don't understand how do we bring these in together, how do we start appreciating this? You are not required, by the way, to love everything. So for example, one of the things that kadai theory does highlight is you can dislike people. That is your choice. ये आपकी मर्जी है. We all have options and choices, and sometimes we have the right to dislike. ये कौन कह रहा है कि टीम में तो जबरदस्ती गले जीतते हर वक्त? Not necessary. We can dislike people, but we cannot be disrespectful to them. I think this is what the core of diversity for success is. और आपने बताया, technically I'm just preparing you for lunch also. यहाँ पे कहीं पे भी बिरयानी कौन कौन खाता है? Biryani has this one item, chewable and eatable as well. तो आलू बुखारा कह रहे हैं वो तो वैसे लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन निकलती है आप ही की प्लेट से। इलायची। How many people don't like an इलायची in your biryani? नहीं क्यों नहीं? अच्छा, लॉन्ग होता है, लॉन्ग। अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि जब इलायची है या वो है या हरी मिर्च है, ऐसा नहीं लगता 500 लोग खाना खा रहे हैं, जितनी निकलनी आप ही की प्लेट से। बंदा कभी बार सोचता है कि इतने लोग हैं, लेकिन उनके बगैर बिरयानी बनती नहीं है बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग पसंद खा लेते हैं, लेकिन पसंद नहीं है। नहीं, कुछ पसंद से खाते होगा लगेगी। तो ये जैसे इलायची किसी को नहीं पसंद, इलायची नहीं पसंद, ऐसा नहीं लगता कि इलायची करके टारगेट किया हुआ कि आप ही प्लेट से निकलना है। 50 लोग खाएंगे, इनकी प्लेट से निकलेगा। आप अगर नहीं खाते तो आप उसको साइड पे रख देते होंगे, लेकिन आप मना नहीं करते होंगे मत डाला क्योंकि उसकी जरूरत है। Similarly, in a society, we need all kinds of people. If I come back to the original example, we need all kinds of zodiac signs. We need all kinds of genders. We need all kinds of people from different parts of the world. We need to be collective. That is when the food is ready.
आपको नहीं पसंद, आप उसको साइड पे करो। वो डिसलाइक वाली एग्जाम्पल है। डिसलाइक का मतलब ये तोड़ फोड़ बंदे को साइड पे रखते ना, मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसे को नहीं पसंद, साइड पे कर देते, लेकिन उसको बाहर नहीं फेंक देते। ना ही हम कहते ऐसे होने ही नहीं चाहिए। हर कोई है किसी वजह से, अगर लोगों की वजह समझे तो आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द ब्रेकिंग द बायस। व्हाई? I don't understand. I have difficulty understand. Why break it? Why be destructive in nature? And I think this is coming down from my compassion. तोड़ फोड़ क्यों करनी है? क्या लिखा है? Break the bias. What is the bias? मैं कभी कभार शुरू में बात करते HR के लोग कहते हैं we should not have any bias. हो ही नहीं सकता, इंसान बना biases की वजह से। मेरी राय इस वक्त मेरा bias है, आपकी राय इस वक्त आपका bias है। तोड़ना क्यों है? पहले मानो के bias है। First accept that you have a bias. Then understand what is the bias. How is your and my bias different? What needs to be done? ये करने की जरूरत है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। हम लड़ने में लगे हुए, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। दो एक्सट्रीम भी है, एक्सट्रीम कंजर्वेटिविज्म एंड एक्सट्रीम लिबरलिज्म, अगेन बायस, दोनों का बायस है। या बात कर लो, हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू बी एबल टू रिजॉल्व इट। एंड कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है? कम टुगेदर एज अ सैलेड, स्टॉप दीज बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स दैट पीपल क्रिएट, वरना आगे जाएंगे नहीं, एंड इसी तरह लड़ते रहेंगे। कम टुगेदर वापस हो जाएगी वापस। I think you said salad. Come together as a salad, yes, thank you. Okay, so come together as a salad, using my original analogy. Come together as a salad, ताकि बातचीत करेंगे। जब तक अपने कोने में रहेंगे ना, Come together as a good guy. and we'll form the कराई। बातें तो करो ना पहले, लोग बातें नहीं करते। हम कई दफा बाहर अगर पॉलिटिकल एकदम हम बाहर बातें करने की बातें करेंगे, अंदर बात नहीं करेंगे। ये बात को बात करना डज नॉट मीन एक्सेप्टिंग। बात करना गुफ्तगू इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, एंड यू हैव दैट डायलॉग, यू टॉक अबाउट इट। हु इज आस्किंग यू, मे बी वी कम अप विद समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट, लेकिन लोग बात नहीं करनी, कन्वर्सेशन नहीं करनी, जल्दी में सब लोग वर्ड बोलो, सुनते नहीं है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आई डोंट नो इफ यू सीन दिस, आजकल सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, दिस इंडियन शो व्हिच वाज कमिंग, राहुल समथिंग, यू हैव सीन दैट व्हाट्सएप वीडियो, डेविड मैकएडम्स की। वो देखा, अगर नहीं देखी तो इफ यू डू गेट टू सी इट, इट्स इंटरेस्टिंग। देयर इज अ इंडियन होस्ट, ही इज स्पीकिंग टू somebody in Kiev, and he's calling him somebody in America. So the guy is saying, I don't want, we don't want war, and he's going, but you have to, but America is doing this. Had he taken 3 seconds to listen, 3 सेकंड गलत आदमी को कोट कर रहे हैं, भाईजान आप सुन लो ना, 3 सेकंड सुन लो वो बंदा कह क्या रहा है। लेकिन नहीं, तोड़ फोड़ दस बुलडोज कर दो। हाँ, and as long as I have my own agenda, I am right, I have to say this, I am in a corner technique. If I use the Sobha wali example, I am standing in a corner. Are we going to do this? अब मैं I just flash a few slides, as I said, जो बातें मैंने की वो स्लाइड्स पे हैं, ताकि स्लाइड्स आपको भेज चुका है। इधर I just flash through some slides. It gives you an idea कि क्या क्या चीजें हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल की मैंने बात की, ऑयल में क्या क्या चीजें आती हैं, and then these by the way, this when you get the slides, you will get this. It's the individual characteristics as well. कि फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें टीम्स में क्या क्या फायदा होता है, and around this is something that I'm actually creating the entire questionnaire to a psychologist. A strong sense of objective, promotes decision making, delegates readily, good chairman of वो दूर से रह की चीजों को कर सकता है, वो तेल का काम है। तो when I share the slide with you, there's a lot of text on this one. You get this, there are fire key qualities. जो अभी हमने मजाक में we had because it's a session with a little fun way, I would say कि आग जला देता है, चीजें करता है, but fire challenging, driving, dynamic, leads in difficult situations, takes hard decisions, overcomes obstacles. If I break this out further, अनिल के भी यही है, अनिल मैंने कहा प्यार दर रुला देता है, काम उसका creative, imaginative, as you said, the Capricorns, I can't deny that, unorthodox, problem solving, lateral thinking, ये चीज ये लोग लेके आते हैं, innovation लेके आते हैं, मिर्ची, हरी मिर्च, ये लिखकर बड़ा अहम रोल है, लाल मिर्च आपने कहा हरी मिर्च, ये वैसे जस्ट हरी मिर्च वाले लोग ऐसे होते हैं टीम में, जब भी कोई अच्छा काम भी होने वाला होता है ना, ये इतनी तंजिया बातें करते हैं, ये वेरी सार्कास्टिक, इतनी तंजिया बातें करते हैं, लोग कहते हैं कस के इनको लेकिन मतलब ये बातें सही होती है। तो somebody said we are doing this, just as an example, we are doing a diversity for success. अच्छा तो हम 1 घंटे में डाइवर्सिटी सीख लेंगे। सड़िया मारने वाले लोग जानते हैं, आसपास बहुत होते हैं, जरा सा कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा आप ये करेंगे, आपके सिर्फ ये सफाई की जगह दुनिया चेंज हो जाएगी। ये आपने बहुत सुना होगा, मिर्चे ये लगाने की आदत है, मिर्ची क्या होगा
तुम्हारे करने से क्या तुम्हारे करने से क्या होगा? मिर्च से की होती है, मिर्च का अच्छा रोल भी बड़ा अच्छा होता है। मिर्च जो है करते ही है हाँ, मिर्च जो डिसिप्लिन होते हैं, एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज, खुद बहुत सही से चलते हैं, इसलिए दूसरों की कीड़े निकालने में बड़े एक्सपर्ट है। नॉट नेसेसरी वर्डोज, not necessarily verticals, but yeah, practical solutions from ideas. So what I've got is in these slides, as I said, there are different examples of each one. टमाटर का भी मैंने कहा था आपसे, सॉफ्ट लोग होते हैं, तो हमें परफेक्शन नहीं आता कि for lack of a better word right now, रोते नहीं रहते। This is what they bring. They avoid friction. नहीं चाहते किसी का भी दिल दुखे, अच्छे रिश्ते होते हैं, टीम्स के अंदर बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं, people love them. तो चमचा जी कौन चमचा politically पता नहीं, चमचा politically correct is a word that you could use, लेकिन I use an excellent communicator. किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, ये सारी चीजें क्या मायने देने हैं किसी चीज को, जी क्या मायने देने हैं, क्या मायने देने चीजों को, वो और खुशी खुशी करते लोग enthusiasm they would also have. तो इसका भी बड़ा रोल होता है टीम्स के अंदर in order to contribute. फिर एक और आपने कहा था यहाँ पे नमक नजर आता है, लेकिन कितना अहम रोल है. हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉल्ट इन एनी फूड. विदाउट सॉल्ट यू डोंट हैव एनी फूड. बैक ऑफिस स्टाफ नजर आता है, तेल पता कर सकते हैं आप, चीजें कर लेते हैं. ये सॉल्ट का भी बड़ा अहम रोल होता है. They have rare skills or knowledge. So these are people who bring speciality into the team. So for example, an internal auditor. Many people don't like it, लेकिन बड़ा खास काम होता है उसका करने का. कोई आईटी का कोई बंदा पीछे से बैठ के कोई चीज बनाने वाला, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट, बहुत अहम रोल्स होते हैं इनके. हर बंदा चलता फिरता नहीं करता. इन्हीं में चाय देने वाला होता है, उसके बगैर भी आपकी टीम नहीं चलती, जो उसको मुस्तकिल फीड अप कर रहे होते हैं. तो अब क्योंकि वो ऐसा काम नहीं ना हर कोई कर सकता है, खाली चाय जाके देनी थोड़ी है, उसको भी पेश करने का तरीका है. एनीथिंग विच इज वेरी स्पेशल इज समथिंग दैट दीस गाइस विल डू. What they do is they keep up to date, accurate information, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इनको अपने शोबे में, अपने काम में सबसे आगे रहने का इनको बहुत शौक भी है, जरूरत भी है. So I would just come now. Are we good with this? And just to जो धनिया वगैरह का आपने जो कहा था, वो ये आ जाती है गार्निशिंग, कॉन्शियंशियस, अटेंशन टू डिटेल. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एंड में आते हैं, तो सारा काम हो जाता है, आपको देखते सही है नहीं है, क्योंकि ये तार सही नहीं लगेगी, उसको वो बंदा बिल्कुल सही लगता है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है. That person is actually contributing. He makes sure that things actually work out. Moral of the story: we are all different people. Creating differences is the easiest thing to do. चाहे कम मजाक में अगर वो थोड़ी साइंस के हिसाब से कर लें, जेंडर से हिसाब से कर लें, एज के हिसाब से कर लें, एजुकेशन के हिसाब से कर लें, आपके एजुकेशन स्पेशलिटी के हिसाब से अलग अलग कर दें. इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू क्रिएट डिफरेंसेस. The challenge is to have that conversation and look for similarities. वो एक सामने बड़ी अच्छी बात की थी. He said कि सामने से जो बंदा आ रहा है ना, even from 10 meters, I could possibly identify कि उसके शर्ट पे दाग है. So if your shirt has a stain, from 10 meters I can say, you know what, your shirt is stained, but I don't see the stain on my nose because it is there. I need to have somebody to tell this to me. जितनी हम ये गुफ्तगू करें, that is why it says diversity for success. If you want to be successful, you are successful. But imagine how much more can be done if you open yourself up to the ideas and things coming from the outside world. And इसके अंदर ये जो है एक चीज मैं क्लियर कर दूं, दिस मोर लाइक अ डिस्क्लेमर ऑन माय साइड. प्लीज डू नॉट यूज यहाँ से जाने के बाद लोगों के साथ लेबल मत करने लगे. ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद यहाँ से उठे तो करें मिर्ची, टमाटर हो या तो तेल हो, भाईजान चमचे. So my objective is not that we start labeling people as well, because we are human beings. And any प्रैक्टिस के लिए अगर ये करें तो उसको बुराई है. Knowing that you are doing it, or अगर दोनों your practice or identifying people, what they उसको बोलेंगे इस वक्त तुम ये कर रहे हो वो अच्छा है, because at different times you play different roles. So for example, even in the end of the book, when the book comes to the end and when the main character has understood the Karai theory, the conversation between the grandfather and the grandson is that, listen, we are human beings. We can be playing multiple roles. There are multiple flavors that we bring in. There is something which is dominating. I know to large extent I'm an onion. If you were to classify me, but that does not mean I don't deliver. Being an onion does not give me the right to come in for 11:30 session. Let's say 11:40. So
So what if I... chicken? Sorry? What about chicken? Then I am also a chicken because I have a team as well. So as human beings, we play multiple roles, and that is the potential that we have. Imagine if this is what the vegetables can give as creations of God, how many flavors do we bring in? What is the limit? There is no limit. The extrovert की जो बात की थी, in my mind, introvert and extrovert is also a label. For those of you who heard of MBTI, I am an introvert. But then I have also over the years, it's a label. जब मुझे अपने आप को बचाना होता है ना, if I have to get into my community, I am an introvert. जब बाहर निकलना होता है, I'm extrovert, because when we were born with the potential of mixed set of characters. The world has induced and put in these different experiences because of which my speciality of an onion, of a tomato, of a pea has come in. You know, for example, politically correct आपने कहा, I realized school के अंदर, I was not staying in Pakistan. When I came to Pakistan, देसी बच्चों ने बहुत मुझे तंग किया हुआ था. And that's when I realized कि अगर स्कूल में अगर बचना है ना, if you want to survive yourself from the school bully, from your class bully, उस स्कूल का सबसे बड़ा bully है ना, उसके साथ दोस्ती करो. So I actually learned my networking skills from them. ये बैलेंस सही है, क्योंकि इसके साथ दोस्ती करोगे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा. So, and you never realized, maybe it never happened, it never clicked at that time. Just clicked me about a couple of months back, perhaps it clicked me. You know what? Why do I actually look for such things? So, you just play a role. The question is, how much conversation am I having with myself? How much conversation am I having with others? तो एक चीज आज मैं क्लैरिफाई कीजिए, इसको लोगों को लेबल मत दे दें. जैसे लास्ट टाइम इन्होंने पक्ष फेरी का भी कहा था, लोगों को खोता मत कहते थे. If you want to be successful with diversity, these are just some suggestions, and this is actually my last slide. यहाँ से जाते लोग कहते हैं, करना क्या है? What I would like to do is engage with people who are different the same way, because we are all different the same way. चाहे वो zodiac signs हो जाए, चाहे genders हो जाए, सब अलग अलग है. एक ही तरह के अलग अलग हैं हम लोग. लोगों के साथ बात करें, समझें उनको. जो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है ना, अक्सर लोग कहते हैं ऐसे लोग मुझे क्लिक नहीं करते. समझे तो सही कि क्यों क्लिक नहीं करते. ऐसे लोग होते कैसे, जो कहते हैं इस तरह के लोग. These kind of people. Who are these kind of people? What are they doing? So this is where curiosity comes in. Maybe a little sensitive and nothing personal as well. For example, I watch a lot of, and I've been telling people, I watch a lot of Russia TV today. RT, I think it's so good. तो अक्सर लोग मुझे आजकल कह रहे हैं, आजकल खास तौर से, and I think it's sensitive and I'm deliberately saying this, क्योंकि it exposes your mind. Because looking at one kind of media forces you to agree with a particular mindset. When you look at the flip side, you don't have to agree. What is the harm in listening? People find it difficult to listen. So even if there's something which is outside, जो चीज हम नहीं करते, जो जगह का नहीं पता, जिस कल्चर का नहीं पता, पढ़ लें, देख लें, मानना ना मानना, रिलीजन है, read about other religion. वो आजकल कुछ लोग नहीं ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे. मैंने कहा इतना कमजोर रिलीजन है, किसी के पढ़ने से read about somebody else's religion and your religion changes, ये तो आपकी कमजोरी है ना. What is the harm in reading and discovering? So the entire world is open. So be curious. Encourage friends and empower team to call out bias. जब आपको लोग कहना है भाईजान यहाँ पे bias दिखा रहे हैं, don't react. Maybe it is a bias. And unless you want to have that bias, फिर तो अलग लेकिन कोई highlight करते ना आपका ये bias है. आपको मैंने देखा गुफ्तगू के साथ ये करते हो. मैंने ये देखा है कि आप इस तरह के लोगों के सामने आप उनको इस तरह की बातें करते हो. Accept it. For example, एक मैं जा रहा था एक लिफ्ट के अंदर, एक साहब आए लिफ्ट में, quite some years back, early 2000s. I Chandrigura, going to an office, I went in. वहाँ पे एक साहब अंदर आ गए. He was wearing a green turban, गाड़ी थी, and पैंट शर्ट उठे हुए, व्हाइट शलवार कमीज. मैं खुद पाकिस्तान नया नया आया, मैंने कहा जनरली तो मैं go to the lift ना, I was say hi, good morning ऐसे करता था. वो अंदर है ना, मैं चुप भी लगी मेरी. मैंने कहा बात ही नहीं करनी. Perception, I had a bias. फिर ऊपर के मीटिंग हुई, क्योंकि मैं रवे का खामा बात करूँ, पता नहीं क्या चीज कह देगा. मैं कहूँगा सलाम को कहेगा, सलाम नहीं कहते, पूरा कहते हैं. तो I had these things that were going on in my mind at that time. When we went up into the room, secretary का रूम अभी भी आए तो आप 5 मिनट, ठीक है. After 5 minutes I went and met the same guy who was in the lift. But now he was in a client position. अपनी मेरी बातें सुन कर पोजीशन चेंज हो गई ना, from a character in the lift to a potential client. But I think by having that comment, I realized how open he was. बाहर से पढ़ के आया था, उसकी सोच, उसकी चीज. उस जमाने में वो early 2000 artificial intelligence की बातें कर रहा था अपने processes के अंदर, systems के अंदर. I was, and then actually मैंने देखा ना मेरे को ब्रेक नहीं लगता. मैंने कहा, you know what? I actually hesitated in saying you because he said no, that's perfectly alright. I said, but it was important for me to understand that's my bias. वो दिन आज के दिन मैं कभी भी इतना बुलिया के ऊपर लोगों को जज नहीं करने की कोशिश करता हूँ. I wouldn't say perfectly कोशिश करता हूँ. I don't get it. When people say this to you, this is what your assessment of your first impression. Question your own stereotypes. दूसरों का भी शुक्रिया करें.
और अपने आप को भी जायजा लेते रहें. The world is beautiful. Every individual brings a lot of special things. Try looking for those special things and you create success for yourself. With that, thank you very much. It was thank you slide मैंने बनाई है, thank you to all. आपने slide tag आ जाएगा तो याद आएगा आपके पास. But yeah, so thank you very much for having me. हाँ, question. आपने बात की कि एक्सेप्ट हाउ दे आर रादर देन टू मेक चेंज. कि हम ये ज्यादातर हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसीलिए से होती है कि हम उनको चेंज करना चाहते हैं, जैसे वो होते हैं उनको एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं करते, उनको चेंज करने की कोशिश में ही कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते चले जाते हैं. बिल्कुल सही. इसको मैं पहले क्लियर कर दूं. बिफोर यू एक्सेप्ट द चेंज, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट द डिफरेंस. डोंट एक्सेप्ट द पर्सन, accept the difference. You can still accept, not agree with the person, which is all right. पहले समझेंगे हमारे ये differences क्यों हैं, and then you can actually decide कि अगला step क्या करें. जैसे ना biases का कहा, इससे पहले कि मैं मांगू भी क्यों, ऐसा भी नहीं कि मैं मांगने वाला हूँ. Thank you. मालूम कुछ कमिटमेंट आपने बात की थिंग जॉब के कॉर्पोरेट सर्कल में हम देखते हैं तो ये एंटी डाइवर्सिफाइड व्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं यार इस पोजीशन पे हमें ये फीमेल ही चाहिए नंबर 1 और नंबर 2 डाइवर्सिटी एट द कॉस्ट ऑफ मैरिट. ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मैरिट के ऊपर हम डाइवर्सिटी को बिल्कुल सही बात है. ठीक है. और एक क्वेश्चन ये था जब हम 22 से आपने लिंक किया बिल्कुल ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुई हेट स्पीच थे और डिसलाइकिंग डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हुई. तो व्हाट आर द लिमिट्स जो हम बात करते हैं मतलब डाइवर्सिटी की लिमिट्स होती है. नमक आटे की भी आपने बात की ना कढ़ाई में वो ज्यादा हो जाए तो वो पूरी कढ़ाई खराब हो जाएगी. तो वो जो लिमिट्स हैं वो कौन रियलाइज कराएगा हमारी सोसाइटी में. बहुत सवाल है. लेट मी टेक इट वन एट अ टाइम. पहला आपका था एक, दूसरा आपका था पहला वाला मैं इसके लिए दूसरा आपका था मेरिट एंड डाइवर्सिटी. आई एग्री विथ यू. ये हमारे यहाँ ये जो है क्योंकि डाइवर्सिटी समझते नहीं है, कोटा सिस्टम ज्यादा है. यार आप पहले वो मैार पैदा करो फिर आप लोगों को लेके आ जाओ. पहले आप कोटा करते हो, कोटे के अंदर पाकिस्तान के एग्जाम्पल, कोटे के अंदर आप जेंडर डाइवर्सिटी के चक्कर के अंदर आप जेंडर्स को ऐड कर देते हो. इसकी जो होती है आपको एक आप 2 या 2% needs to be at the board. अब बोर्ड के लिए फिट है नहीं फिट है आप उसको डाल दो. A deserving candidate could be any gender is not given an opportunity. क्योंकि अगर आपका ये एजेंडा है जो आप सक्सेशन प्लानिंग वाली बकवासें करते रहते हैं लोग तो बेटा सिखाई दो ना, लोगों को डेवलप कर दो. आई थिंक देयर इज अ कंपनी इन सऊदी अरेबिया एंड आई कोट सऊदी अरेबिया बिकॉज वी जनरली एसोसिएट वेरी स्ट्रांग. ये बंद हो गया ना पाकिस्तान ये डिसरिस्पेक्ट में बहुत क्विकली कन्वर्ट होता है. तो इसमें किन लोगों का काम आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो और लिमिट्स क्या होनी चाहिए. लिमिट्स ऑफ एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट. एक there's another very interesting book I don't know if you read Good to Great by Jim Collins. उसके में एक important point है. It says right people on the bus. So it says right people on the bus, which is very interesting क्योंकि जनरली हमने सुना था बचपन से वो स्टीवन कवी वाली बातें भी. हाँ स्टीवन कवी कि हर कोई सही होता है पहले समझो. तो जब जिम कॉलिंस ने ये कहा ना राइट पीपल ऑन द बस मेटाफोरिकली स्पीकिंग विच एक्चुअली अपने आप पर सही लोगों को अपने साथ लेकर चले. तो मेरे ध्यान में एक सवाल है कि राइट पीपल होता कौन है. मे बी दे डिड नॉट क्लैरिफाई होलिस्टिकली इन द बुक एज मच. हम ये कहते हैं राइट पीपल वो है जिनके इकदार हमसे मैच करते हैं, वो हमारे लिए राइट है. जिनसे इकदार मैच नहीं करते हमारे साथ राइट नहीं है. इफ यू एक्सप्लोर फर्दर anything which goes in with overall universal good, universal facts, humanity, and human by the way is a word also, just the root of the word is grounded. तो हर वो चीज जो आपको हकीकत और असल के करीब रखती है वो चीज सही है. तो फॉर एग्जाम्पल किलिंग पीपल फॉर वॉट एवर रीजन इन द नेम ऑफ फ्रीडम और इन द नेम ऑफ टेररिज्म और वॉट एवर इट इज इट अ यूनिवर्सल राइट? टेक एनी रिलीजन ऑन द अदर साइड, encourage people to kill. If not, then they're not right people. फिर बात करनी पड़ेगी. ये नहीं करेगी. इसकी ये लिमिट्स है. लेकिन एनी करप्शन कोई भी रिलीजन कोई भी मदद इजाजत नहीं देता. गलत चीज है. तो यूनिवर्सल राइट्स एंड रॉन्ग हैं लेकिन शर्त ही यूनिवर्सल, नॉट माई कम्युनिटी की राइट्स एंड रॉन्ग्स. तो माई कम्युनिटी की राइट्स एंड रॉन्ग से बाहर निकल के ओवरऑल देखें. So those hate speeches were overall not in line with the spirit of humanity, of being grounded, of being one. It was the wrong thing to do. Just like as much as it is. Thank you. Thank you. Good to great. Next book. We have with us Fatma Nafisa. She is governing board member. She is about to make an announcement for ladies only. Please.
come here. So it's my pleasure to be here today, Farhad. It was very enlightening and interesting to be here through your session. Thank you. I'm talking about, I am Jilani Saab's colleague here on the governing board, and this year under, in fact, the cultural segment of PACC, which is headed by Jilani Saab, one of the things that we are doing for the first time is we have a yoga class here regularly, and we have quite a few, and this is for ladies. We have actually 2 sessions, morning and afternoon. This year we are doing a meditation, yoga, mindful yoga and meditation session here out in our auditorium for ladies, 9:30 to 11:30 on International Women's Day, which is the 8th of March. So I'd welcome all of you ladies here and any other friends and family that you can bring along. I would strongly recommend. It's a first at PACC. We are trying to, in spite of us being there on the board and otherwise, but come out more forcefully in the ladies segment. So Jilani Saab is always there to help, cooperate and facilitate. Thank you very much. I will share the poster in the group, and we have with us Rafi Saab of Toastmasters, not Sayyid Rafi, not Sayyid Rafi, Ted Rafi. अभी ये तो हम सुनते रहते हैं ना, आप सुने, आपका नमूना देखने कैसे कुछ थोड़ा सा एक मिनट टोस्टमास्टर होता है. Thank you first of all, Jilani Saab, and of course Farhad for a wonderful session. So this is Rafi, and I am the former president of Zenith Toastmasters Club. So just quickly to give you an idea what Toastmasters is all about. We help people, we help develop people, we give them a platform to practice, improve their communication and leadership skills in a safe environment where we do not judge people, we do not label them. In fact, we encourage them. We encourage them to make mistakes, to try new things, and by making those mistakes, we help them improve. So that is the overall thrust of Zenith Toastmasters Club, and we meet every Thursday from 7 to 8:30 at Dot Zero on Main Tariq Road. So I'd love to welcome, well, not all of you, but at least most of you to our next meeting. You're welcome to join us every Thursday from 7 to 8:30 p.m. at टोस्टमास्टर होता है. शब्बीर साहब सुबह तैयार हो गए हैं माशाल्लाह. जी, मैं टोस्टमास्टर क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी मीटिंग हर एक जुम्मा छोड़ के 5:30 बजे PACC में होती है. अच्छा, एक खूबसूरत बात जो हमारे ज़ेनिथ टोस्टमास्टर वालों ने भी कहा और स्पीकर ने भी कही कि हम किसी को जज नहीं करते. मदर थेरेसा कहती थी, जो किसी को जज करता है वो किसी को खुश नहीं कर सकता, वो खुश नहीं रख सकता. तो तकरीबन आप ये समझे कि जितनी भी बातें इन्होंने की, हमारे स्पीकर बहुत खूबसूरत बात, और टोस्ट मास्टर के जो कॉन्सेप्ट से बहुत इन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग. जितना आदमी क्लब में आता है उतना अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और लोगों को, और यही अंडरस्टैंडिंग उसको ग्रो करती है और आगे. तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर आएंगे. असल काम तो आप हो गए. नाउ राफी साहब कुछ बेचैन हो रहे हैं, आप लर्नड स्पीकर कुछ देने के लिए. So you want to present something? Yes. Thank you. Thank you. Thank you. आप तशरीफ रखनी है या क्योंकि हाँ प्लीज बैठ के अच्छा है.
Please put your hands together. Impact on us of the presentation that we made. Let me first of all read about him. Farhad uses wit. Is it correct? Yeah. No doubt. He uses humor with appreciation, inquiry to get results. We had results here. Yeah. And is renowned for facilitating strategic meetings like us with management and leadership teams. Of course, they come whenever they come. Envision future strategies that are crafted by identifying their purpose. His style and attitude to life is best explained by a comment on Farhad by Ed Scanlon. He is the author of Games Trainers Play, a very famous book by the father trainers. So he says, not Farhad, learning is fun and you proved it. There is also evident in the business parable, which are what theory that he wrote, and Karai theory that you saw that. And that Farhad has authored. So wonderful Farhad, I have an association with you for a very long period of time, even with your father. You know, your father once saved my life. I was hospitalized and they were treating me wrongly. Middle East Hospital, let me see, it is not there now. A Farsi, doctor, not a quack. Wrongly treating me. So I said I must be transported somewhere else from here. I did not have a car or any. So I could only think of his father, Fateh. His father's name is Fateh. And within 5 minutes he was there. I phoned him. He came. I said, look, take me out of this hospital because they are going to kill me. And he took me to Arhan Hospital. This was 1986. 1986, Arhan Hospital has just appeared on the scene and I didn't know much about it. And they, of course, they confirmed that you were being wrongly treated. It was just a gallbladder that has gone wrong. Today, in today's time, gallbladder is a very simple thing. You just go to the hospital. And I was kept in the hospital for 12 days. But it was all due to his father. So I'm very grateful to him. I've got a lot of stories to be told about Farhad. Lots of stories. It took me actually 4 years to bring him here today. 4 years. I've been constantly after him. And he never refused. He said, yes, let me look at my diary because he is an international trainer. He is an international motivator. So his demand is worldwide. He goes to Saudi Arabia, he mentioned about Saudi Arabia. He goes to Sri Lanka. He has lived a long time there. In fact, I think he was born in Sri Lanka. Oh. So, and he goes into the interior of a very sought after commodity. And people are ready to pay a lot for him. And he has got, above all, he has got no time. So, luckily, very recently,
I was reminded again. We meet so often because we live, we are neighbors. We live in the same vicinity and attend some spiritual meetings together. So that is a common point between us. His son's name is Cass. So Cass, is Majnun or somebody who goes into jungle. So I tell his son, Cass अकेला है जंगल में. कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे 100 दीवाने हम. 2 दीवाने. मैं आपको ये 100 जो 2 को मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, because Linkers is a platform. Now this is I am saying for the people who are not so familiar. Are there people who are first time here? No, first time. Yes. So this Linker was actually came into existence. I got the newsletter that was published in 1996. So this was born in 1995 with a different name, Positivity or Positive Thinkers Club. So the beginning was that it was born because you see our society has got so much negative input. You watch TV, you watch somebody talking, except Farhad. And you get a lot of negative news. The more negative you are, the better is your market. Otherwise, you don't earn anything. This may be a wrong perception, but it is there. So we said, okay, we will have a club where people will talk only positive things. For example, I remember when we had a first meeting, we said, okay, let us talk positive. So there was one gentleman, he says, I want to tell you a story. Farhad said that story are much better than just talking. Is that right, Farhad? Yes? Story is actually our life, if we see. And they are the best way of communicating with others. So this gentleman said that today in a taxi, a person forgot a bag in which there were 10 lakh rupees. And the taxi driver came to the hotel where he dropped the man and gave it back to him. This is happening in Karachi. This is a positive news. So as a sample, this was given. Now, so that was the beginning. In 1997, I heard Farhad speaking, as he said, speaking to a Rotary Club. I used to be a president of Rotary Club then. Maybe in 87 I was. Then, in Rotary Club there is a system, is that you also become a past president. So you remain president for life, but past. Jilani, I don't know, Yusuf Jilani is a president or past president. But he has remained connected with. Neither I am president, nor past, I am kingmaker. You're kingmaker. So he spoke at one of the Rotary Club. Sajid Worki was the president there. I just learned from him because I have forgotten the name. And he listened. And as Gilani says, I think Gilani was also there in that meeting. So he talked about the Stephen Covey's, those 7 habits. He talked about that, very colorfully explained. I even asked him, why it was so much light. He says, I bring the
bring my talk to life. So there was, in Rotary Club, there is a tradition that the speaker is invited. Always in a meeting, a speaker is invited. Actually, we have learned this technique from him. And then at the end, like me, somebody offers a vote of thanks. So this president comes on the stage and he offers a huge vote of thanks to Farhad. Imagine this, the year is 1997. You can calculate how many years back the story goes. And how old I was and how young he was. Right? 20, you minus 23 from him. He's only 24 years old. He's still young. So, yeah. So, that gentleman came profusely thanking him for coming to speak in Rotary Club. And then he says, I am so much impressed with you that I want to change my name to your name. And, he says, I want to adopt you as a son. I want to adopt you as a son. Because he was very young. And if you don't like my name, because if you become my name, then you become Walki or whatever his name was. No. He says, if you don't like my name, I will change my name to your name. I would call myself Karamaly, Farhad Karamaly, and you are already Farhad Karamaly. That was the biggest tribute coming from that man. And it was really so much impressive. So that is the first encounter I had of Farhad. Another encounter, his beauty of his book. We were having him, Dinkers was having him in Sailing Center. When we used to have meetings in Sailing Center. So the light went, the air conditioning stopped, heat, it was maybe June or July, that kind of month. And almost everybody was there. Only Farhad was at ease. And he continued, he says, okay, let's go out. The strategy, the presence of mind, the alertness, the courage. Right? So, then we had a meeting outside, which was very successful. This encounter. Then I tell you one very important thing about Farhad. He's a man of commitment. He bought a new car. Absolutely, spotless. Zero meter, of course. He was very happy driving it. That car made an extraordinary accident. From the front. Is that right? And then, of course, he was hurt. His legs and his hands, and he was wheelchair and hospitalized. All those things happened. But he had promised to speak in Lahore. Literally, if I would be there in his place, I would say, Baba, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ, बात क्या करूँगा? और preparation क्या करूँगा? और fly कैसे करूँगा? But he said, no, I will conduct the seminar. And he was there. He was there to conduct the seminar. Of course, he took some help from his assistants. Preparation was made. And first class delivery was made. So this is, you see, what I have seen in him is, if you allow me a few minutes, a couple of minutes only, in praise of
I have seen that Farhad, what he does is that he's a world-class professional. Whatever he decides to do, he sees that it is perfectly delivered to his clients, to the audience, to 100% of his satisfaction. This commitment I have seen in very, very few people. You see, for example, there are three things on which he was totally committed. Number one is that he found in Pakistan that the companies do not have a succession plan. Right? And he promoted in those organizations. See, he's getting money, but he's giving money his worth. He's seeing that this, because of no succession plans, there is a failure of organization. Complete. Not only that, so he promoted, he talked about it, kept on, so that, people make some sense of what he's saying. But he also documents what he said. So he wrote a book, which today he has not talked about, and that is PACC. PACC is an animal that is actually child. Donkey child. Training. A PACC is always follows the elder, so that there is a succession. So we learn from donkeys how really to live and conduct ourselves wisely. This is all. Yeah. Number two, he thought that really in organizations, people want photocopies. People want that, if you are like this, a right to right. You talked about the gentleman's that you always take right people. That right people is according to your thinking. You do not want to have a Karai theory. So he promoted that, and not only promoted that, but wrote a book. So that this concept can find its place all the time. Number three, he believes in compassion. Compassion in business. Compassion. So, he closely worked with Pakistan Charter of Compassion. Amin Hashwani, he heads the organization, Charter for Compassion Pakistan. This was started by Karen Armstrong. And Karen Armstrong actually talks about diversity. She says, pluralism or inclusiveness. And those kind of terms, are being used. So really, today we are very, very grateful, Farhad, once again, for a wonderful